Act 2, Scene 1 begins when Brutus is walking all alone in his garden. So Act 2 of Julius Caesar begins when Brutus is walking all alone in his garden. So Brutus is calling his servant, "What, Lucius? Lucius?" Now Brutus is talking to himself and he says, "I cannot by the progress of the star give guess how near to the day." So Brutus says, looking at the star, I cannot understand how far the night has progressed and how far is the morning. So Brutus means to say that looking at the star, it is difficult for him to understand ke kitne baje hain, what is the time of the night and when it will be morning. I cannot say by the progress of the star. So Brutus says, looking at the star, I cannot say what is the time of the night. So I cannot give how near it is today. तो ये रात कितना खत्म हो चुका है ब्रूटस को समझ में नहीं आ रहा है. So ये सीन शुरू हो रहा है, ब्रूटस अकेले है और अपने गार्डन में टहल रहा है. रात के काफी वक्त हो चुके हैं और वो आसमान के तारों को देख के बोल रहा है कि तारे देख के समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कितना बजा है और ये रात कितना बीत चुका है और सुबह कब आने वाला है. So he's talking to his self and he's saying, Lucius! अपने सर्वेंट को बुला रहा है. He said, Lucius! So Brutus is calling to his servant. I would it were my fault to sleep so soundly. So Brutus is saying, when he calls his servant who is sleeping, so Brutus says, if I sleep so calmly, so comfortably, so peacefully, when the country is in trouble, it will be fault in me. This line proves that Brutus is very responsible to the country. And he says when the country is in trouble, जब country इतना trouble में हो तब इतना सोना ब्रूटस के लिए नुकसानदेह है, मतलब उसके लिए एक क्राइम है. So this proves that Brutus has self-imposed responsibility about the country on himself, which means that Brutus thinks that it is his responsibility to do something when the country is in trouble. And when the country is in trouble because of Julius Caesar, and if Brutus sleeps, it would be crime, according to him. It would be fault in him. So the first speech, Brutus is calling his servant and then he's talking to himself and he says, and looking at the star, I cannot say how far the night has progressed and when the morning is about to come. So he again calls his servant Lucius and then he says, मेरे लिए fault होगा क्या? To sleep so soundly. मतलब मैं अपने सर्वेंट की तरह सो जाऊं तो मेरे लिए एक फॉल्ट होगा. So Brutus says that if I sleep so comfortably like my servant, then it would be fault for me. Then again he says, Lucius, Lucius. I say, Lucius. Lucius to soya in me. Lucius is a young servant, he is sleeping. So out of the sleepy world, he half wakes up and says, call you, my lord. मतलब सर आपने मुझे बुलाया, वो भी नींद में. Brutus is saying, yes, go and get me a taper in my study. Taper means a candle. So Brutus is saying to his servant to bring a taper, means a candle. And when it is lighted, जब candle जल चुका हो, to come and call him. So Brutus is saying to his servant that when the candle is lighted, जब चिराग जल चुका हो, तो उसे आके बुलाए उसके study room में. Lucius says, okay, my lord. So Brutus is talking to himself. This is his soliloquy. Soliloquy means when a person is talking to himself. So this part is very, very important for exam, and this is also important for the character of Brutus, and it is also important for the movement of the play. This will give us an insight into the mind of Brutus. This will give us the reasons. This will give us lots of reasons why Brutus wants to kill his friend, best friend Julius Caesar. So this is like peeping into his mind or soul rather.
So Brutus is saying it must be by his death. So Brutus, the very first line that Brutus is talking to himself is, it must be by his death. Matlab the peace of the country, the success of the country, the progress of the country will be by his death. By whose death? By death of Julius Caesar. So पहला लाइन का मतलब है कि जूलियस सीजर को मरना पड़ेगा इस कंट्री के सुकून और शांति के लिए. For my part, I know I have no personal cause to spur at him. So Brutus is saying to himself that he has no personal grudge against Julius Caesar. Brutus को Julius Caesar के against कोई personal दुश्मनी नहीं है. But for the general cause. So why Brutus wants to kill Julius Caesar? For the general cause, not for himself, but for common people, for the benefit of the country, for the betterment of his nation, for the love of his fellow human being around his country. He would be crowned. That might change his nature. So Brutus is saying कि अगर Julius Caesar को crown पहनाया गया तो उसका nature बदल जाएगा. ये तो almost सबके साथ ही होता है. When you give them the power, the real color comes out. So he would be crowned. मैंने Julius Caesar would be crowned. Julius Caesar को king बना दिया जाएगा. That can change his nature. So from good nature, Julius Caesar will become bad in nature. Julius Caesar might become corrupted. That is the question. So the question is, Julius Caesar का nature क्या बदल जाएगा अगर Julius Caesar king बनेगा तो? So Brutus is talking to himself. Brutus is saying कि Julius Caesar को मरना पड़ेगा. Then he's saying, I have no own desire to spur at him, to attack him, to destroy him, but for the general cause. So Brutus wants to kill Julius Caesar, not for his personal benefit, but for the benefit of the country. Then he says, if Julius Caesar is crowned, this can change his nature. So Julius Caesar को अगर crown पहना दिया गया, उसका nature बदल जाएगा. It is the bright day that brings for the adder, that craves the weary working. This line means then when the sunlight is there, it brings for the adder and craves the weary waking. So जब बहुत धूप निकलता है तो adder मतलब सांप, वो अपने बिल से निकलता है और फिर जो लोग चल रहे हैं वो होशियारी से चलना पड़ता, नहीं तो वो कभी भी काट ले. तो जैसे सूरज की रोशनी आते ही, when the sunlight comes and when sunlight becomes very prominent, powerful, effective, then it creates a lot of heat, and because of the heat the snake comes out, and the moment the snake comes out, then the people who are walking WLK चल रहे हैं तो उन्हें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है वरना सांप काट लेगा. Similarly, when Julius Caesar will get power, then anybody who is walking on this country, anybody who is living his life in the country, he has to be very, very careful. In other words, sunlight is compared to power, and Julius Caesar is compared to a snake. Sunlight is compared to power, and Julius Caesar is compared to a snake. So when the sunlight comes, the snake comes out of the hole. Similarly, when power comes, it can corrupt any human being like Julius Caesar. Crown him, that I grant that we put a sting in him. So making Julius Caesar king, making Julius Caesar the king of Rome, giving him the crown is like putting a sting in the mouth of a snake. Sting मतलब होता है जिससे सांप काटता है. मतलब जूलियस सीजर को राजा बनाना ऐसे ही है जैसे स्टिंग, सांप को स्टिंग देना. So making Julius Caesar as the king of Rome is like putting a sting into the mouth of a snake. अब snake के पास अब sting है, आप जाइएगा तो काट ही देगा. So Julius Caesar को राजा बनाना सांप को स्टिंग देने के बराबर. That at his own will he can do danger. तब सांप काट सकता है. वैसे जूलियस सीजर अगर राजा बन जाए तो वो कोई भी डिस्ट्रक्शन कर सकता है. So Julius Caesar, if he becomes king, he can be as destructive as a snake. So as a snake can bite, Julius Caesar can harm. Julius Caesar को राजा बनाना ऐसे ही है जैसे स्नेक को काटने का मौका देना. The abuse of greatness is when it disjoint.
remorse माने kindness from power. So next line is a philosophy of Julius, is a philosophy of Brutus. Brutus believes that greatness is abused. मतलब महानता बर्बाद होता है कब? When it is disjoint remorse from power. It means कि जब जिसको पावर दिया गया हो उसके पास कोई रिमोर्स ना हो, कोई काइंडनेस ना हो, कोई दया ना हो, कोई पिटी ना हो, कोई मर्सी ना हो. So the greatness is misused. माने Julius Caesar will misuse the power. Why? Because according to Brutus, Julius Caesar does not have remorse. He is disjoint from remorse. मतलब जूलियस सीजर के दिल में कुछ मर्सी, काइंडनेस, दया नहीं है. और जब पावरफुल लोगों के पास दया नहीं होता है, then they only misuse their power. So the line means that Julius Caesar will abuse the greatness. When a person abuses the greatness, when the powerful person is disjoined, is removed from kindness. जब एक इंसान के पास, पावरफुल इंसान के पास दया ना हो, तो अकॉर्डिंग टू ब्रूटस वो पावर का मिसयूज करता है. And to speak of Caesar, I have not known him that his affection sways more than his reason. So he's saying he is very less affectionate. He is more reasonable. He is more practical. He is more prudent. He is less emotional. He is less merciful. So he's saying, I have not known his affection sway more than his reason. So he is not a person who gives a lot of value to emotion, mercy. He is more swayed, moved towards, like the pendulum of the clock, towards reason. So Julius Caesar has often been seen to be more reasonable and less emotional. And if a person is less emotional, less merciful, and when he has attained the power like the king of Rome, then according to Brutus, according to Marcus Brutus, it is danger. तब वो खतरनाक है कब? जब जिस इंसान को पावर मिले और उसके पावर में कोई दया ना हो. और जूलियस सीजर को अक्सर ये देखा गया है, he swayed towards reason and less towards emotion. It's a common proof that lowliness is a young man's ladder. This line means that it is often seen that a person who wants to become successful, a person who wants to become famous, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग loneliness हम बनते हैं. Loneliness में humble, opposite of घमंड, ego, proud, घमंडी का उल्टा बनते हैं. मतलब वो ईगोलेस हो जाते हैं, वो पोलाइट हो जाते हैं, वो लविंग, केयरिंग, हम्बल हो जाते हैं. सो ह्यूमिलिटी, लोलीनेस मींस हम्बल, हम्बलनेस मतलब ह्यूमिलिटी इज अ यंग मैन्स लैडर. मतलब जो लोग हम्बल होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रूटस, वो एक सीढ़ी बनाते हैं अपने हम्बलनेस का, ह्यूमिलिटी का, और उस सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ते हैं. मतलब कि लोलीनेस इज द लैडर ऑफ एन एम्बिशियस पर्सन. एक इंसान जो बहुत ही एम्बिशियस है, मतलब जो बहुत लाइफ में अचीव करना चाहता है, पाना चाहता है, राजा बनना चाहता है, सबसे पावरफुल बनना चाहता है. सो जो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं वो लोलीनेस को सीढ़ी बना के चढ़ते हैं. एक बार फिर से सुनिए. इट इज अ कॉमन प्रूफ. क्या है कि हम्बलनेस जो है एक एम्बिशियस आदमी का सीढ़ी है. वो ह्यूमिलिटी का सीढ़ी बना के चढ़ते रहता है. बट वेयर टू क्लाइम्स द लैडर अपवर्ड टर्न्स हिज फेस. एक बार वो लैडर को क्लाइम कर जाता है, फिर वो अपना चेहरा वहां से घुमा देता है. बट व्हेन ही अटेन्स द utmost round, he then onto the ladder turns his face. He is saying कि एक बार वो सीढ़ी पे चढ़ता है, वो हम्बल इंसान. So once he keeps climbing the ladder of success with humility, उन्हें वो कामयाबी का सीढ़ी हम्बल बन के, पोलाइट बन के, लविंग बन के, केयरिंग बन के चढ़ते रहता. So once he attains the utmost round, मतलब सीढ़ी के सबसे ऊपर रंग में, मतलब एक स्लैब को रंग बोलते हैं. मतलब सीढ़ी पे एक पेडेस्ट्रियल पे चढ़े, फिर दूसरे पे, तीसरे, so it's called rung. So the moment he climbs the utmost rung of the ladder, once he attains the utmost round, one utmost point, utmost height, he then onto the ladder turns his back. So ladder के ऊपर से चढ़ के फिर ये पीछे सब लोगों को भूल जाता है.
He looks into cloud. He looks into cloud मतलब he looks at higher things in life. He looks at success and he looks at comforts of life. Scorning the base techniques. फिर ये नीचे जो लोग हैं उनको स्पॉन करता है, क्रिटिसाइज करता है, उनको बोलता है बेस डिग्री, मतलब उनको नीच बोलता है. सो जूलियस सीजर और पीपल लाइक जूलियस सीजर अकॉर्डिंग टू मार्कस ब्रूटस, दे यूज हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी as a way to become successful. And the moment they become successful, they turn their face towards these people. मतलब जिन जहां से वो कामयाब हुए थे उन लोगों से, उन लोगों को पीठ दिखा देते, उन लोग का हेल्प नहीं करते, उन्हें अपना नहीं समझते, उनको केयर नहीं करते. Okay, scorning the base degree by which he did ascend. एक बार वो ऊपर चढ़ने के बाद पीछे के लोगों को भूल जाता. सो सीजर भी ऐसा ही करेगा क्या? He will climb up the ladder of success by becoming humble. And once he becomes humble, he will look into the cloud, not look at the common people, not look at the masses, not look at the poor people. And then he will criticize this base degree. नीच लोगों को, मतलब जूलियस सीजर सब लोगों को बेस समझेगा, हकीर, नीच, चीप समझेगा. By which did he ascend? इन्हीं लोगों के हेल्प से ऊपर चढ़ा है. Ascend मतलब होता है चढ़ना, descend मतलब उतरना. So Julius Caesar has descended this success, ladder of success, with the help of these very people. But now Julius Caesar looks down upon people. Now he criticizes people. So the least he may prevent. So least he may prevent. Julius Caesar भी अगर राजा बनेगा तो वो भी ladder of success को climb करेगा, वो भी लोगों को criticize करेगा. So here Brutus is saying इस होने से अच्छा least he does this, means इससे पहले कि वो करे, we have to prevent it. मैंने हम लोगों को उसको कामयाबी का सीढ़ी पे चढ़ने देना ही नहीं है, बिकॉज एक बार वो चढ़ जाएगा तो एक बार वो राजा बन जाएगा, then he will forget all of us, he will call us base degree, and he did climb from this place, but he will criticize us. And since the quarrel will be of no color, अब वो जब राजा बन जाएगा, जब सबसे पावरफुल मैन इन रोम और यूरोप बन जाएगा जूलियस सीजर, तब क्वारल करके कोई कलर, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ए पावरलेस पर्सन कैन नॉट क्वारल विद अ पावरफुल पर्सन. सो दिस dynamics will not work. So then the quarrel, since the quarrel will be of no color, तब जाके क्वारलिंग करके, आर्गुमेंट करके, फाइट करके कोई कलर नहीं मिलेगा, मतलब कोई बेनिफिट. So here Julius Caesar has to be prevented. Least he becomes Varna, least Varna. Otherwise, he may become like what? Like all those people who climb the ladder of success and then they scorn, criticize the base degree, lower class people. Since the quarrel will bear no color, एक बार जूलियस सीजर अगर राजा बन गया तब क्वारल करके कोई फायदा नहीं. Then it will bear no color, then it will bear no benefit, no profit, no use. फैशन इज दस, मैंने फैशन मैंने यही हैबिट है, यही तरीका, यही सिस्टम है, यही होता रहा है. क्या कि एक बार लैडर ऑफ सक्सेस पे लोग चढ़ते वक्त बहुत हम्बल होते हैं, बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, और एक बार चढ़ने के बाद वो लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं. दैट व्हाट इज ऑगमेंटेड रन टू द एक्सट्रीम्स. कि जब ऐसे लोग, जब वो ऑगमेंटेड हो जाते हैं, जब वो चेंज हो जाते हैं, जब वो पावरफुल हो जाते हैं, तब क्या होता है? दे रन टू द एक्सट्रीमिटीज, मतलब तब वो एक्सट्रीम कुछ डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं. वंस यू गिव द पावर, then with the help of the power a person can do extreme destruction. See, if there is a boy of class 9, he can destroy certain things, but if you become the president of United States and if you are very bad, then you can probably do destruction extremities to a larger extent. So एक बार कोई चेंज हो जाए और खास करके वो इंसान जो बहुत पावरफुल हो, तब उसका डिस्ट्रक्शन बहुत दूर दूर तक हो सकता है. सो जूलियस सीजर को अगर ऑगमेंट किया जाए, चेंज किया जाए, तो उस चेंज से डिस्ट्रक्शन बहुत हो सकता है. देयरफॉर थिंक हिम एज अ सर्पेंट स्नेक. ये बोल रहा है कि जूलियस सीजर को एक सांप के अंडा जैसा समझा जाए.
इससे पहले कि उस सांप के एग से स्नेक निकले और काट ले, it is better to snatch the egg before the egg hatches. Therefore think Julius Caesar, him मतलब Julius Caesar, at serpent snake. So he would run to the extreme. Julius Caesar कुछ extreme करेगा तो Julius Caesar को, therefore we should think Julius Caesar, him and Julius Caesar, as a serpent snake. Julius Caesar जो एक सांप का अंडा है, which hatched, अगर वो अंडा टूटा, अंडा hatch किया, then उसमें से निकलेगा सांप, and then it will become mischievous. Therefore Julius Caesar should be killed in the cell. जूलियस सीजर इससे पहले के बाहर निकले उसको उसी में मार देना चाहिए. So servant came. So till now Brutus was talking to himself and was thinking that Julius Caesar is like a snake who can come and bite at any moment. Julius Caesar is like a person who can climb the ladder of success by becoming very humble, very loving, very polite, and then he can do destruction to common masses. Base degrees, book में लिखा है. So then Julius Caesar is compared as an egg of a snake. So इससे पहले कि वो अंडा फूट के सांप निकले, we should destroy the egg. इतने में सर्वेंट आता है ब्रूटस का. So Lucius comes. So Lucius, the servant of Brutus, comes and says, the tapper burns in your closet, sir. Closet मतलब tapper माने candle, burn it माने burn. So the candle is burning in your study room, sir. Searching for the flint. Flint मतलब होता है दो पत्थर होता है, उसको ऐसे ऐसे करके आग जला जाता है. So Lucius is saying, when I was searching for the flint, I found this paper, मतलब letter, news मतलब handwritten letters. Thus sealed up, मतलब वो सब ऐसे sealed है. And I'm sure, sir, it did not lie there when I went to bed. Lucius is saying, sir, जब मैं सब बिस्तरा करके सोने जा रहा था, तब कोई चिट्ठी नहीं था. Now, when I went to light the candle in your study, I found this. So Lucius comes and informs Brutus that he has found few letters, and these letters were not there in the beginning, but they are now when he went there. Brutus, go to the bed again. Is it not day? Brutus is saying to his servant, okay, go to bed now. तो सुबह नहीं हुआ, रात ही है, जाओ सो जाओ. So Brutus is asking his servant, is not tomorrow boys Ides of March? Brutus is asking his servant कि कल Ides of March है ना? The servant is saying, sir, I do not know, sir. So Brutus is saying, okay, go look into the candle. Look in the candle and bring me the word. जाओ कैलेंडर में देखो. सॉरी कैंडल नहीं, कैलेंडर में देखो. मतलब उस जमाने का कैलेंडर था, कुछ हम लोग जैसा नहीं, कुछ मतलब उन लोगों का टाइप रोमन कैलेंडर. ही सेइंग look at the Roman calendar and go and bring me the word कि क्या कल Ides of March है. Ides of March is a festival, it's a date, it's a 15th of March. So he's talking कि कल क्या वो Ides of March है, because Ides of March is a day on which Julius Caesar is supposed to die according to the soothsayer. He's saying, I will, sir, I will. Brutus. The exultation whistling in the air gives so much of light that I may read by them. So Brutus is saying कि हाँ इतना meteor का light है, तूफान जैसा चल रहा है, इतना light है कि हम यहाँ पढ़ सकते हैं. So Brutus says that we can read the letter in the garden because there is light. So Brutus opens the letter and says, सब चिट्ठी में ये सब लिखा हुआ है. बहुत सारे चिट्ठी हैं. So he's reading a part of all the letters. So Brutus is reading the letter that was thrown at his study room, into his garden and many other places. So Brutus is reading the letter and he says, Brutus, you sleep. Wake up, Brutus, wake up and see for yourself. Rome, etc. Brutus, speak, strike, redress, fight, correct, redress, correct the wrong. Brutus, you are sleeping awake. सब चिट्ठी में लिखा, Brutus, तुम जगो, कुछ करो, तुम सो रहे हो. The country needs your help. जल्दी करो, कुछ करो. Such instigation has often been dropped when I have to look them up. So Brutus is saying कि ऐसा चिट्ठी बहुत बार आया है और बहुत सारे लोग हमको ये बोल रहे हैं कि कंट्री के लिए कुछ करो, कंट्री के लिए कुछ करो. Wake up, Brutus, wake up, do something, redress, correct the wrong. Rome, etc. He's saying much. वहाँ नीचे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ from Romans, etc.
तो ब्रूटस इज सेइंग मस्ट आई फिल पीस, मैंने फिल दिस आउट, मैंने कौन भेजने वाला है इसका नाम हम फिल करें. सेल रोम स्टैंड अंडर वन मैन्स ओह, इज सेइंग क्या रोम एक आदमी के पावर के तले दब जाएगा. So he's saying Julius, he's talking about Julius Caesar. He's saying Julius Caesar के पावर के अंडर क्या सब कोई दब के रह जाएगा. What Rome? My ancestor did from the streets of Rome, Tarquin tribe. So he's saying कि मेरे forefather Julius Caesar, ब्रूटस के forefather बहुत साल पहले, बहुत साल पहले एक आदमी था टर्क्विन. He wanted to become the dictator of Rome, but this people, the democratic people, the republican people, the people who believed in democracy, like the forefather of Julius, sorry, Brutus, they forced that Tarquin to go out of Rome. They said कि रोम में डेमोक्रेसी रहेगा, रिपब्लिकनिज्म रहेगा, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, यहाँ कोई किंग नहीं हो सकता. So Julius Caesar is also now the modern Tarquin. And what Brutus's forefather did, now the Brutus and Brutus followers, they have to do this. So Brutus is reminding himself कि मेरे ही forefather ने डिक्टेटर से लड़के उसको भगाया था, टर्क्विन को रोम से भगाया था जब वो किंग बनना चाह रहा था. Indirectly is saying कि if my forefather can drive Tarquin out of Rome if needed, this Marcus Brutus will drive Julius Caesar out of Rome if needed. So he's saying, again he's reading the letter. He's saying letter में लिखा है speak, strike, redress. So he's saying, am I entreated? I'm requested to speak and strike. So he's saying, I am requested to fight. Oh Rome, I make the promise. So he's saying, I'm making a promise. If the redress will follow, if there is a fight, civil war, correcting the mistakes of the person follows, you receive thy full petition at your hand. So he's saying to this country, a country agar kabhi व्यक्ति को दरकार पड़ा, so Brutus will give full petition, full support to his country. And he is making this promise to himself actually, because he is not saying it to anybody. It's a soliloquy, it's a talking to self. So when you're talking to self, most of the time you're very, very honest. So he's saying to himself that Rome, I make you a promise. He's saying that Rome, my motherland, मेरे वतन, मैं तुमसे ये promise करता हूँ कि अगर कुछ redress हुआ, अगर कुछ civil war हुआ, अगर कुछ fight हुआ, अगर कुछ support का दरकार हुआ, so Brutus will give full petition, full support to his country. इतने में servant आया, servant Brutus का. So servant is saying, sir, the march is wasted 14 days. मतलब Ides of March कल है सुबह में, आज 14 दिन हो चुके. इतने में knocking हो रहा है दरवाजा. Brutus, good, go to the gate, somebody is knocking. So Brutus is saying to servant, जाओ जाओ दरवाजा खोलो, कोई बुला रहा है, कोई knock. Exit the servant to open the door. Now Brutus is talking to himself and he says, since Cassius first did wet me against Caesar, I have not slept. He's saying कि जब से Brutus is saying कि जब से Cassius ने Brutus को provoke किया against Julius Caesar, I have not slept. So it is Cassius who has wet मैंने provoke, उस्काना, भड़काना, provoke, मैंने motivate का उल्टा, motivate is for positive, provoke is for negative. So he's saying since Cassius provoked me to kill Julius Caesar, I have not slept. He's saying between the acting of a dreadful thing and the first motion and on the entry is like a phantasm or a hideous dream. He's saying कि इंसान कुछ सोचता है और थोड़ी देर या दिन बाद करता है. So सोचने और करने के बीच का time, the entry in between, the interval is like a phantasm, is like a bad dream, it's like a nightmare. So between the thinking and between acting, the time between thinking and acting is like a dangerous dream. The genius and the mortal instrument are in council. So during this time क्या होता है? Genius means the positive side, mortal instrument means all other negative sides. They are in fight, they are in council, they are in debate. So जब तक इंसान सोचे और करे, इस बीच के टाइम को एक nightmare बोला गया है. It's like the good angel is fighting against the negative angel. और फिर इंसान का हालत, then the state of the man is like a kingdom. फिर एक इंसान एक किंगडम जैसा हो जाता है
and suffers the nature of insurrection. फिर वो इंसान सफर करता है. जैसे एक insurrection, एक civil war हो, so civil war that happens in a country between two political parties or two communities, so that is compared to the two different ideas in a human being. One part of Brutus is saying he should not kill his friend. The other part in him is saying he should kill his friend because of country. So there is a debate, there is a fight, there is an insurrection, civil war. There is a argument inside him. एक argument ये है कि he should not kill his friend, एक argument है he should kill his friend for the sake of country. So इन दोनों के बीच में एक war हो रहा है. Enter Lucius. Lucius is a servant of Brutus. So Lucius is saying, sir, it is your brother Cassius at the door. माने brother-in-law उस हिसाब से. Who that desire to see you. So they were all relative, distance relative. So he's Lucius servant बोल रहा, sir आपके relative Cassius है. He wants to see you, meet you. Brutus is saying क्या वो अकेले है? मैंने क्या Cassius अकेले है? He's saying no sir, there are more people with him. और बहुत सारे लोग. Do you know them? Lucius servant is saying no sir, their hats are plucked about their way. लोग सब इतना तक चेहरा छुपा क्या है? And half their faces are covered in the cloak. ऊपर ऐसे हैट है, यहाँ कपड़ा है तो दिख नहीं रहा. By no means I can discover them. Lucius saying उनको समझ में नहीं आ रहा वो लोग कौन लोग है. I don't have any mark of favor. Favor मैंने पहचान, मैंने कोई भी पहचान का मार्क नहीं दिख रहा. So I'm unable to know who are these people. Let them enter. Brutus saying जाओ सबको बुला के लाओ. So Brutus sends his servant Lucius to call all the people. Brutus. They are factions. मतलब they are part of the conspiracy. Oh, conspiracy, are you ashamed to show your dangerous face by the night? Brutus is saying कि conspiracy, साजिश, planning, रात को ही सही है, खास करके when you're planning to kill Julius Caesar. So he's saying conspiracy, you are afraid to show your face in the daytime, so you're showing your face in the night. When evils are most free, so conspiracy कब active हो रहा है? जब रात को evil बुराई ज्यादा है. By the day, where will you find a cavern dark enough? So he's saying कि दिन में अगर ये conspiracy हो तो conspiracy छुपेगा कहाँ? Mask thy monstrous face. Mask मतलब hide. Mask पहनने से चेहरा छुप जाता है. तो mask the monstrous face मतलब तुम्हारा ये बुरा चेहरा तुम छुपाओगे कब? Seek none. Conspiracy. Hide it in smile and affability. saying कि conspiracy जो है अपना चेहरा छुपाना है तो वो स्माइल में छुपाए, लव पोलाइटनेस में छुपाए. So where will conspiracy hide its face? Conspiracy will hide its face in smiles and loving kindness, politeness. If your path any native resemblance on, मतलब अगर conspiracy बिना mask किया जाए, not even Airbus will be dim enough to hide the evil. Airbus is the darkest place in hell. So if conspiracy comes out without hiding its face, then they cannot hide its face even in Airbus. मतलब कि Airbus सबसे dark place है hell में. उससे भी dark conspiracy है. So if conspiracy comes in the daytime, they will have no place to hide themselves. Conspiracy cannot hide themselves even in Airbus because they are so dark. So nothing can hide the evilness of conspiracy, to hide it from prevention. मतलब फिर conspiracy दिख ही जाएगा क्योंकि conspiracy इतना dark है कि Airbus में भी वो लोग छुप नहीं सकते. So conspirators लोग आ गए, Enter Cassius, Casca, Decius, Brutus, Cinna, Metellus, Cimber, Trebonius, सब लोग आ गए, conspirators लोग आ गए. Yes. I think we are too bold upon the rest. Good morrow, Brutus. Do we trouble you? Cassius बोल रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी आ गए, क्या आप सो रहे थे? Did we disturb you? Did we trouble you? Brutus is saying, I have been up this hour, awake all night. So Brutus is saying, मैं अभी तक रात जग रहा था. No
are these men that come along? Buddha is saying, क्या मैं इन लोगों को जानता हूँ? Because they have all covered their face, so Buddha is unable to recognize them. So Buddha is saying, do I know all these men? Cassius is saying, yes, you know all of them. No man here but honors you. Cassius is saying, yes, सब लोग आपकी इज्जत करते हैं Buddha की. And everyone that wish you had but opinion of yourself, which every noble bears of you. So he's saying कि यहाँ हर लोग मतलब जितने भी conspirators हैं, they all respect Buddha a lot. So it's every Roman bears of you, and this is Tribonius. He's saying you're Tribonius. Buddha is saying you're welcome here. He is welcome. Cassius is saying इनसे मिले, ये Decius Brutus. He's saying you're welcome too. Then Cassius is saying this is Casca, this is Cinna, this is Metellus Imber. They are all welcome. Brutus is welcoming all of them. What watchful cares to interpose them between the night, eyes in the night. So this line means कि आखिर इतना क्या जरूरी बात है कि ये रात को छोड़ के अभी सबके सामने सबके बीच में आ गए हैं. So what is so important that is stopping their eyes to close even in the middle of the night? मैंने बोला ये चाह रहा है कि कितना important काम क्या है कि रात के 3 बजे सब लोग मेरे घर में. So Cassius is saying, can I talk to you for a minute? So Cassius and Brutus, they're talking to themselves separately. Audience cannot hear. So Brutus और Cassius जो है वो साइड में चले गए, कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और जब तक वो बात करे तो ये यहाँ के लोग तो चुप नहीं रहेंगे. मैंने ऑडियंस लोग स्टेज पे मैंने स्टेज पे देख रहे हैं. So at the corner of the stage, Brutus is talking to Cassius. So just to pass the time so that they can complete the conversation. So this they are talking about सूरज कहाँ से निकलता है, मतलब एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट है. Here lies the east. Does not the sun day break here? माने यहाँ से सूरज निकलता है. Day break माने starting of the day. Casca is saying no. Then saying, oh, pardon sir, it does. Beyond the grey lines, the freight clouds are messenger of the day. Saying ये cloud जो दिख रहा आसमान में, यही वो messenger है कि यहाँ से सूरज निकलेगा. You confess that you are so here. Casca is saying to them कि you both are deceived. You shall confess. मतलब तुम लोग अपना गलती मान लो कि तुम लोग सब गलत बता रहे. कहाँ से exactly सूरज निकलेगा. Here as I point my sword, the sun rises. He's saying कि देखो मैं जो भी तलवार दिखा रहा हूँ, इसी साइड से सूरज निकलता. Which is a great way growing on the south. Weighing the youthful season of the year, he's saying कि अभी season जो है young है, starting है, इस time पे साउथ से सूरज निकलता है. So he is giving reasons that since it's a youth of the season, it's a starting of a season, and during this time the sun rises from this place. Some 2 months hence up higher towards the north. So he's saying कि 2 month यहाँ से वो थोड़ा नॉर्थ के साइड से निकलेगा. अभी यहाँ है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. So he has a marking के 2 महीना बाद ये यहाँ से निकलेगा, 2 महीना बाद ये यहाँ से निकलेगा. His first present is far and the high east stands as a capital directly here. So he's saying कि सूरज जो है यहाँ उसके बाद कैपिटल के पास से डायरेक्टली निकलता है. This is just the feeler, you know. When Cassius is talking to Buddha, so they're talking about सूरज कहाँ से निकलता है. क्यों बोल रहा सीजन यूथफुल है तो साउथ से निकलता है. कुछ महीना 2 months hence वो नॉर्थ से निकलेगा. And here I present the sword. बोल रहा देखो हम तलवार यहाँ दिखा रहे हैं, सूरज यहाँ से निकलता है. So this is just to fill up the time. Brutus Cassius तब तक बात हो गया. Now Brutus is shaking hand with everybody. So he's saying, give me your hands, all of you, one by one. Cassius is saying कि चलो हम लोग एक कसम खाते हैं. Let us swear a resolution. मतलब let us take an oath. Brutus is saying no, not an oath. Oath नहीं. Not if not the face of men, the sufferings of soul. It's time abuse. He's saying कि अगर हमारे चेहरे पे हमारा दुख दर्द ना हो तो टाइम का बर्बादी है. If our motive is weak, मतलब हम लोग अगर मकसद कमजोर हो, हम लोग अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं हो, so हम लोग अभी जाते हैं बी टाइम्स, हम लोग अपने अपने बेड पे जाके सो जाते हैं, क्योंकि अगर मकसद वीक हो तो कसम खा के कुछ नहीं फायदा. लेट एवरी मैन गो टू हिज बेड. कैसियस इज सेइंग कि हम लोग कसम खाते हैं. ब्रूटस इज सेइंग नहीं, कसम नहीं, कसम. ही सेइंग कि अगर हम लोग के फेस पे वो दुख दर्द फॉर द कंट्री, फॉर द मदरलैंड नहीं हो, फॉर नेटिव कंट्री नहीं हो, तो हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं. अगर हम लोग का मकसद वीक है तो इससे अच्छा जाके बेड में सो जाना है. So let high-sighted tyranny reign. तो इससे क्या होगा कि जो टायरेंट है जूलियस सीजर, उसको रूल करने दो.
फिर हम लोग एक एक करके मर जाएंगे। अगर हम लोग का मकसद वीक हो तो ओथ लेके कुछ नहीं होता होगा। लेट हिम डाई, लेट जूलियस सीजर रूल ऑन एंड वी ऑल डाई बाय लॉटरी, एक एक करके हम लोग मर जाएंगे। बट इफ आई एम श्योर टू बियर फायर इनफ, इस saying कि अगर हम लोग के अंदर फायर हो, करेज हो, हिम्मत हो, टू इन टू किंडल कावर्ड्स, मतलब टू गिव करेज टू कावर्ड्स, मतलब अगर हमारे अंदर इतना हिम्मत हो कि बुजदिल भी बहादुर हो जाए, टू स्टील विद वैलर द मेल्टिंग स्पिरिट ऑफ वुमेन। सो ये सेइंग कि अगर हमारे अंदर इतना ताकत हो कि वुमेन का जो कमजोर स्पिरिट भी मैस्कुलाइन हो जाए, देन कंट्रीमैन डू वी नीड एनी अदर स्पर बट अवर ओन कॉज। इज सेइंग कि हम लोगों को और हिम्मत, कोई मोटिवेशन चाहिए अपार्ट फ्रॉम अवर ओन कॉज। अवर ओन कॉज इज अवर रूट। तो इस सेइंग कि अगर हमारे अंदर इतना हिम्मत हो कि कावर्ड्स लोग भी स्ट्रांग हो जाए, औरत लोग का स्पिरिट भी मर्दाना मैस्कुलाइन हो जाए, तब हम लोग को अगर ऐसा हिम्मत है, तो वो हिम्मत तो कॉज से ही आता है, वो मकसद से ही आता है। टू प्रीकॉन्स्टिट्यूट सेइंग कि अगर अगर हम लोग इतने कमिटेड है, लॉयल है, सो नथिंग कैन चेंज अस, nothing can force us to do it, to change. What other bond than secret Roman is saying, सबसे बड़ा बॉन्ड ये है कि हम एक रोमन है और तुम एक रोमन हो, और एक रोमन एक दूसरे रोमन से प्रॉमिस करता है तो कभी नहीं तोड़ता, इसके लिए ओथ का डर कारी नहीं। So if a Roman has spoken the word to another Roman, he will keep it, believe. पैल्टर चेंज, इससे कि अगर एक रोमन ने एक रोमन से प्रॉमिस किया तो क्या वो कभी बदलेगा? What other oath than honesty to honesty engage is saying कि अगर एक ऑनेस्ट मैन दूसरे ऑनेस्ट मैन से एंगेज हो गया है तो और कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं चाहिए। दिस शैल बी और वी विल फेल फॉर इट। ये सेइंग ऐसा ही हो, अगर हम लोग ऐसा ना कर पाए तो हम लोग फेल हो जाएंगे। अगर हम लोग के अंदर स्ट्रॉन्ग ओथ, मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ना हो, तो ओथ लेने से कुछ नहीं होगा। देन इज सेइंग प्रीस्ट लोग स्वेयर करते हैं, मतलब जो बदमाश प्रीस्ट बाबा लोग होते हैं वो कसम खाते हैं, कावर्ड्स लोग कसम खाते हैं, मैन कटे में वो जो कौन मैन लोग होते हैं, बदमाश लोग कसम खाते हैं। क्यों? ओल्ड फीबल क्लैरियन, मतलब जो लोग अंदर से मरे हुए होते हैं, सफरिंग सोल, जिनको गलत करना होता है वही ओथ लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ब्रूटस, बैड प्रीस्ट, कावर्ड्स, पीपल विद वेरी वीक फ्रॉम हार्ट, सफरिंग सोल, बिकॉज उनको गलत करना होता है वो ओथ लेते हैं। ऑन टू द बैड कॉज द स्वेयर ओथ, बट डू नॉट स्टेन टू इवन द वर्च्यू ऑफ द एंटरप्राइज। कि हम लोग कसम खाएंगे ना तो हम लोग का महान काम जो है इसमें तो ब्लैक स्पॉट लग जाए। Unto bad cause swear such creature as man doubt, but do not stain the even virtue of our enterprise। is saying कि हम लोग का महान काम में इविल एंटरप्राइज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि our work is so holy that if we take oath it will be stained। जैसे सपोज यहाँ पीछे दीवार में कोई काला दाग लग जाए तो दिखेगा, so their oath will destroy the dignity of their positive enterprise। मतलब वो लोग इतना अच्छा काम करे, से पीछे ये सादा दीवार है वैसे ही, और अगर इसमें धब्बा लग जाए तो ये गंदा दिखेगा। वैसे ही उनका वर्क, उनका डिटर्मिनेशन एकदम पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव डिटर्मिनेशन जो है खत्म हो जाएगा अगर वो ओथ लेते। So he's saying swear, priest swears, coward swear, men courtiers, cheaters swear, old feeble clarion, जो अंदर से मुर्दे हो चुके हैं वो कसम खाते हैं, suffering soul, जो अंदर से उनका सोल सफर करता है वो लोग कसम खाते हैं। क्यों? Because they welcome wrong, क्योंकि उनको कुछ गलत करना होता है। On to the bad cause the swear oath, मतलब वो उनका मकसद बहुत कमजोर होता है इसीलिए वो कसम खाते हैं। Do not stain the even virtue of our enterprise। He's saying कि हम लोग के इस महान काम में ओथ लेके ये महानता खत्म हो जाएगी। Do not stain the even virtue of our enterprise। He's saying कि हम लोग का जो महान काम है, एंटरप्राइज में वर्क, इसका जो वर्च्यू है, गुड क्वालिटी है, इसमें धब्बा लग जाएगा। Nor the inseparable metal of our spirit, to think that our cause, so he's saying our spirits are so powerful, it is so inseparable, मतलब इसको दबाया नहीं जा सकता है। तो
We don't need an oath. So Brutus believes that oath is an insult to any good cause. To think that our cause, our performance did need an oath is saying कि हम ये सोचना ही पाप है कि हम लोग का महान काम में, महान गोल में कोई ओथ का दरकार भी हो. When, so he's saying when every drop of blood, every Roman bears, and nobly bears, is guilty of severally bastardy if we break every smallest particle of virtue. So he's saying कि अगर हम लोग सब रोमन है, हमारे अंदर हर एक ड्रॉप जो है वो रोमन का ब्लड है, सो अगर हम लोग सब बास्टर्ड हुए, इफ वी डू ब्रेक द स्मॉलेस्ट इंटरफेस, अगर हम लोग अपना थोड़ा सा भी अपने बात से चेंज हुए तो हम लोग बास्टर्ड होंगे. गाली है मतलब इट्स मीन टू से कि हम लोग गलत होंगे, गंदे होंगे. सो बास्टर्ड इन द सेंस ऑफ अब्यूज. सो ही सेइंग कि इफ वी ब्रेक, अगर हम लोग अपने बात का थोड़ा सा भी चेंज हुए तो हम लोग सब एक बास्टर्ड होंगे. ऑफ एनी प्रॉमिस दैट हैज पास्ड फ्रॉम हिम. सो ही सेइंग कि हम लोग के दिल से जो कुछ भी बात निकला है एज अ वर्ड, वही प्रॉमिस है. अगर उससे हम लोग चेंज हुए, इफ यू ब्रेक द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of what we have said, then we are several time bastard. हम लोग का होली ब्लड ऑफ रोमन नहीं रहेगा. अब कैसियस तो बोला था नो ओथ. ब्रूटस ने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया अपनो, तब बोलने का राय क्या. कैसियस. But what of Cicero? Shall we not sound him? So now they are deciding कि कौन कौन को और किस किस को मारना चाहिए along with Julius Caesar. तो कैसे से saying कि सीजरो का क्या करें? Shall we kill him? I think we stand very, he will be good with us. कैसे तो saying सीजरो को क्या करना, उसको मारना नहीं मारना क्या करना. कास्का is saying let us not leave him out. कास्का बोला नहीं नहीं, उसको छोड़ने अब सही नहीं होगा. सिन्हा बोला no, by no means. सिन्हा is मतलब उसको भी कॉन्स्पिरेसी में ले लिया जाए कि नहीं. तो एक बोल रहा है इसको छोड़ दिया जाए, एक बोल रहा है इसको ले लिया जाए कॉन्स्पिरेसी में. सॉरी. सो मेटलस सिम्बर इज सेइंग कि नहीं नहीं उसको ले लिया जाए. क्यों? बिकॉज वो बहुत बुजुर्ग है और उनका सिल्वर हेयर जो है वो हम लोग के ओपिनियन को अच्छा बना देंगे. हम लोग का मतलब मर्डर भी पॉजिटिव दिखेगा. The main voice to commend our deed, it shall be his judgment rule our hand. So he's saying कि लोगों का ओपिनियन हम लोग के तरफ हो जाएगा और लोग समझेंगे कि बूढ़ा आदमी भी हमारे साथ है, इसमें कोई मतलब बचकाना हरकत नहीं है, बहुत सीरियस कोई काम है. So the experience of the old man will prove that these young people are doing is also good. Our youth and wildness shall know which appear will be buried in his cavity. So इन लोगों का यूथफुलनेस में जो बेवकूफी लगेगा ना, वो ये बुजुर्ग साथ रहने से वो सीरियस, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट हो जाएगा. So what will appear as foolish work in their mind will become very serious for them. So what appears as very foolish for young people, when Cicero like old man is there, it will all be buried in his gravity. वो serious, उनके साथ रह के सब काम serious हो जाएगा. Brutus is saying, oh, name him not, he will not break with him. Let us not break with him, for he will never follow anything that other men begin. He's saying कि वो तो मतलब कोई और शुरू करता जो काम वो उसको कभी फॉलो नहीं करते, तो उनको लेके तो रिस्क हो जाएगा. Then leave him. कैसे saying ठीक है तो उसको छोड़ दिया जाए, अपने ग्रुप में ना लिया जाए, क्योंकि वो किसी को फॉलो ही नहीं करते, वो चाहते सब उनको फॉलो करें. द इंडीड इज नॉट फिट, तब बोला छोड़ दो, उसको छोड़ दो. अब ये बात हो रहा है कि क्या जूलियस सीजर के साथ कोई और भी मर्डर होना चाहिए किसी का. शैल नोबडी एल्स बी किल्ड बट जूलियस सीजर. कैसे सेइंग वेल गुड क्वेश्चन. आई थिंक इट इज नॉट नीट, माने इट इज नॉट गुड, नॉट नेसेसरी दैट मार्क एंटनी शुड बी लीव. सो कैसे से सेइंग मार्क एंटनी को भी मारना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ही इज अ बिलवेड ऑफ जूलियस सीजर. जूलियस सीजर और मार्क एंटनी में बहुत अच्छा दोस्ती है, तो एंटनी को छोड़ना मतलब रिस्की हो जाएगा. वी शैल फाइंड ऑफ हिम ए स्वीट कंट्राइवर. कैसियस इज सेइंग कि बहुत चालाक है. कौन? एंटनी, मार्क एंटनी. एंड यू नो बाय मींस इफ ही improves will stretch so far to annoy us and
सो ही सेइंग कि वो बहुत बड़ा प्लानर है, अगर उसको मौका मिला तो अपने पावर रिसोर्सेस को यूज करके हम लोग को बर्बाद कर सकता है। लेट एंटनी एंड सीजर फॉल टुगेदर। सो कैसे से सेइंग कि एंटनी को भी मारना पड़ेगा और जूलियस सीजर को भी मारना। ब्रूटस इज सेइंग देन आवर कोर्स विल सीम ब्लडी। ब्रूटस इज सेइंग तब तो हम लोग का काम बहुत ही गंदा दिखेगा। टू कट द हेड ऑफ एंड हैक द लिम्स। ब्रूटस इज सेइंग तब तो हम लोग का काम बहुत ही गंदा दिखेगा। टू कट द हेड ऑफ एंड देन हैक द लिम्स, like wrath in death and envy afterward. So Brutus is saying कि अगर हम लोग मार्क एंटनी को भी मारे और जूलियस सीजर को भी मारे तो ऐसा होगा कि हम लोग बहुत गुस्से में और हम लोग जलन में और हम लोग मतलब जैसे मारने के बाद भी उसका बोटी बोटी करे वैसा लगेगा। पर मार्क एंटनी इज बट द लिम्ब ऑफ सीजर। अगर हम लोग गला काट दे किसी का तो फिर पैर काटने का क्या दरकार है? तो जब जूलियस सीजर मर जाएगा तो मार्क एंटनी तो पैर है। So according to Brutus, Brutus is very naive, बहुत भोला है, वो बहुत दुनियावी पैतरों से परे है। He is beyond the intricacies of politics. He is just a bookish person who is far away from the negativity of politics, and still he is not so expert according to Julius Caesar. According to this play, Julius Caesar, not the real Brutus, but here the Brutus shown in this play, he is very naive. So he's saying that नहीं नहीं नहीं, एंटनी को नहीं मारना चाहिए। इट विल बी लाइक कटिंग ऑफ द हेड एंड देन हैकिंग द लिम्स। तो मतलब जब हम लोग गला काट ही दे किसी का तो फिर पैर काटने का क्या? जूलियस सीजर को मार दिए तो फिर एंटनी को मारने का क्या? बट ठीक उल्टा ही होगा। सो ही सेइंग एंटनी इज बट अ लिम्ब ऑफ सीजर, लेट अस बी सैक्रिफाइसर एंड नॉट बूचर। सो ही सेइंग कि हम लोग एक जैसे कोई बलि चढ़ाने वाला किसी जानवर का बलि चढ़ाता है, हम लोग वैसे बलि चढ़ाए। हम लोग बूचर लोग की तरह जो लोग बकरी काट के बेचते वैसे नहीं करेंगे। हम लोगों के काम में एक सैंक्टिटी होगा, होलीनेस होगा। So we will kill Julius Caesar as a sacrificer, as a person, as a priest who sacrifices an animal in front of God, not as a butcher who kills something, an animal too, on his livelihood. So he's saying, Cassius, we all stand up against the spirit of Caesar. He's saying कि हम लोग सीजर के अगेंस्ट नहीं है। सीजर जो एम्बिशियस है वो देश के लिए खतरा इसके अगेंस्ट है। एंड द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज नो ब्लड। He's saying हम लोग किसी का खून तो कर नहीं रहे, हम लोग सिर्फ गंदा जूलियस सीजर को हटा रहे। एंड देन वी कुड कम बाय, लेकिन स्पिरिट को मार रहा तो जा नहीं सकता है, तो हम लोग को बॉडी को ही मारने होगा। बट नॉट डिसम्बर सीजर। He's saying कि वी कैन नॉट किल द जूलियस सीजर के उस एम्बिशियस स्पिरिट को मारने के लिए उसको बॉडी को मारना एक नेसेसिटी। हम लोग उसको बॉडी को मारना नहीं चाहते। So Brutus is saying that we are not against Julius Caesar, we are against his ambitious spirit. Then we could come by Julius Caesar's spirit. So let us not dismember Caesar, but alas, Caesar must bleed for it. He's saying Caesar को मरना पड़ेगा। मतलब सीजर इतना एम्बिशियस हो गया है कि उसके एम्बिशन को रोकने के लिए सीजर को तो मरना पड़ेगा। बट अलास सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट, सीजर हैज टू डाई फॉर इट। And gentle friends, let us kill him boldly, not wrathfully. He's saying, Brutus is saying कि हम लोग बहादुरी से मारेंगे जूलियस सीजर को, गुस्सा से नहीं, जलन से नहीं। So Brutus is saying we will kill Julius Caesar bravely, not angrily. Let us carve him as a dish for God. He's saying कि हम लोग उसको मार के भगवान को चढ़ावा चढ़ाएंगे, not as a फूड फॉर डॉग्स। मतलब हम लोग के मारने में एक भक्ति, एक भावना, एक शुद्धिकरण हो, एक क्लीनलीनेस प्रोसेस होगा। सो वी विल गिव दिस फूड एज टू गॉड। मतलब जैसे भगवान को इंडिया में अंजलि में वो सब लोग फ्रूट्स रखते हैं। सो दे आर सेइंग वी विल गिव द बॉडी ऑफ जूलियस सीजर एज an anjali, as a offering to God. And we will not kill him as a food for, as a carcass, a food for dogs. Let our heart, as subtle master does, spirit of the servant to an act of grace. So he's saying कि हम लोग का हार्ट जो है एक मास्टर जैसा होगा। हम लोग का हार्ट हम लोग के हाथ से मर्डर करा देगा, फिर हार्ट ही हाथ को डांटेगा कि why did you kill Julius Caesar? So heart is compared to a master. As a master,
forces his servant to do an act of crime and then scolds them. Similarly, the heart of Brutus and everybody around him will force their hearts to kill Julius Caesar and afterwards scolds them. So our heart, as subtle master, clever masters do, steer up the servant on an act of rage. So कभी वो servant को गुस्सा दिला के कोई काम करा देते हैं, फिर उनको डांटते हैं. वैसे ही उनका दिल उनके हाथों को फोर्स करेगा मर्डर करने का, फिर दिल ही अफसोस करेगा, डांटेगा अपने हाथ को. Why did you kill your best friend? This will make our purpose look necessary, not envious. So saying अगर हम लोग सबको मारने लगे तो हम लोग को लगेगा कि हम लोग जलन से मार रहे हैं, कोई राइट हो रहा है, ये नहीं दिखेगा कि मारना जरूरी था. Which so appearing to the common eye shall be called perjurers and not murderers. So he's saying कि हम लोग अगर एक जन को मारेंगे ना तो लोग ये समझेंगे कि हम लोग प्यूरिफायर है, मर्डरर नहीं. और वो सबको मारने लगेंगे तो लगेगा कि हम लोग मर्डरर है. और मार्क एंटनी think not of him. He's saying मार्क एंटनी उसके बारे में मत सोचो. For he can do nothing more than Caesar arm when Caesar head is cut off. He's saying कि अगर सीजर का मुंडी काट दिया जाए तो सीजर का आर्म क्या कर लेगा, हाथ पैर क्या कर लेगा. वैसे ही अगर जूलियस सीजर मर गया, एंटनी कुछ नहीं कर पाएगा. कैसे सेइंग फिर भी I fear him. मतलब उसको उससे हमको डर लग रहा. बिकॉज क्यों? बिकॉज he has ingrafted love. मतलब उसका डीप लव है. मतलब एंटनी और जूलियस सीजर के बहुत डीप रूटेड लव है. Brutus. Alas, good Cassius, not think of him. If he loves Caesar, all he can do. Brutus is saying, नहीं Cassius, डरो मत. क्या करेगा? ज्यादा ज्यादा बहुत रोएगा. उसको सीजर से बहुत प्यार है, वो खुद खूब रोएगा. He will take thought and die for Caesar. उसको दुख होगा, वो दुख में मर जाएगा. And there are much issued for his given. करी क्या लेगा? He is given to sports, wilderness and company. वो लड़कियों के साथ रहता है, दिन भर hunting करता है, sports करता है, वो क्या कर लेगा? So this is the greatest mistake of Brutus. Letting Antony alive. Letting him live. And whatever Brutus says is absolutely wrong. Brutus thinks कि एंटनी को मार के क्या फायदा. एंटनी तो ब्रूटस का फ्रेंड है, सॉरी सीजर का फ्रेंड है, और वो है भी तो क्या कर लेगा. बिकॉज वो स्पोर्ट्स करता है, वाइल्डनेस मतलब जंगली टाइप है, वो वुमेन के कंपनी मस्ती में रहता है. सो दिस इज सेइंग कैसियस, डू नॉट थिंक ऑफ एंटनी. इफ एंटनी लव्स जूलियस सीजर, व्हाट कैन यू डू? ही विल टेक थॉट. मतलब दिल पे बात ले लेगा, मर जाएगा. बिकॉज वेर मच ही शुड डू, वो कर ही क्या पाएगा. क्यों? क्योंकि वो स्पोर्ट्स करता है. मार्क एंटनी वो वाइल्ड जंगल में कोई खेल तमाशा करता रहता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा. सो दिस इज द मिस्टेक ऑफ ब्रूटस एंड दिस विल टर्न अराउंड द टेबल. ट्रिबोनियस, देयर इज नो फियर इन हिम. ट्रिबोनियस बोला ठीक है, लेट हिम नॉट डाई फॉर ही विल लिव एंड लाफ एट दिस देयरआफ्टर. ट्रिबोनियस इज सेइंग उसको जीने दो, वो बाद में रोएगा. ब्रूटस इज सेइंग पीस, काउंट द क्लॉक. ब्रूटस सेइंग वक्त देखो. हम लोग ऐसे बात करते रहे तो पता चला we cannot do the murder only. The clock strikes 3. सुबह में 3 बज चुका है. People is saying okay, let us part. माने चलो. But it is undoubted yet whether Caesar will come to dare, for he is become very superstitious of late. Cassius is saying कि आजकल वो बहुत superstitious हो गया है, तो अगर जूलियस सीजर आएगा नहीं तो हम लोग मारेंगे किसको. Quite from the main option he once held. मतलब पहले जूलियस सीजर जो है सूटसेयर पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब वो फैंटेसी, ड्रीम, सेरेमनी, रिचुअल, प्रोडिजीज, मतलब कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन, सब पे विश्वास करेंगे. और द अनअकस्टम्ड टेरर ऑफ द नाइट और जो अननेचुरल साइट्स हुआ उस पे भी वो विश्वास करने लगा. और उसके जो पंडित लोग हैं उसको परसुएट करते हैं ये करने वो करने. So now Julius Caesar has changed and he has started believing in fantasy, dreams, augury, मतलब soothsayer. पहले वो नहीं करता था. That so soothsayer may stop him from coming to capital. हो सकता है soothsayer उसको मना करे और वो कल रोम के कैपिटल में आए नहीं. अब आएगा ही नहीं तो how they will kill Brutus. Decius Brutus is not Marcus Brutus. He's saying never fear that. If he be so resolved, I can oversway him. Brutus, Decius Brutus is saying घबराओ मत. अगर जूलियस सीजर ऐसा है तो हम उसको चेंज कर देंगे. For he loves to hear that unicorn may be betrayed with trees. जैसे यूनिकॉर्न को
धोखा दिया जा सकता है ट्री से, ग्लासेस के थ्रू बियर्स लोग को चौंका के पकड़ा जा सकता है, एलिफेंट को गड्ढा में गिरा के पकड़ा जा सकता है, वैसे लायन को टॉयल में, मतलब एक बहुत बड़ा पिंजरा जैसा, उसमें पकड़ा जा सकता है, वैसे मैन को पकड़ा जा सकता है झूठा तारीफ से। For when I tell him he hates flatterer, he says he does, and being the most flattered, let me work. So Decius is saying कि ब्रूटस जूलियस सीजर को जाकर बोलेंगे कि आपको फ्लैटरी से बहुत नफरत है, वो बोलेगा हाँ हमको फ्लैटरी से नफरत है, और फिर यही फ्लैटर करेगा। Decius Brutus will go and say to Julius Caesar, Julius Caesar, you hate flattery, and then he himself will flatter Julius Caesar, but Julius Caesar will not realize. So जैसे एक लायन को होल, लायन को स्नेयर में, टॉयल में, एलिफेंट को गड्ढा करके, डियर को मिरर से पकड़ा जा सकता है, यूनिकॉर्न को ट्री के पीछे से पकड़ा जा सकता है, वैसे ही एक इंसान को फ्लैटरी से ट्रैप किया जा सकता है। लेट मी वर्क, आई कैन गिव यू ह्यूमर द बेंट, जैसे मैं उसके मूड को चेंज कर दूंगा, और मैं, मतलब डेसियस ब्रूटस विल ब्रिंग Julius Caesar to the capital. So the responsibility of bringing Julius Caesar to the capital is upon Decius Brutus. Brutus, by the 8th hour, is this the uttermost? Is Brutus saying, ठीक है 8 बजे हम लोग सब मिलेंगे ना, मर्डर होगा 8 बजे, प्लानिंग है, beat at the uttermost and fail not then. सीधे saying ठीक है 8 बजे हम लोग सब मिलते हैं, कोई फेल नहीं होगा। Metellus symbol. Cassius Ligarius bears that Caesar heart, who rated him for speaking well of Pompey. I wonder none of you thought of him. He's saying कि Cassius Ligarius के बारे में तुम लोगों ने नहीं सोचा, जिसका सीजर से झगड़ा हुआ था। Now good Metellus, go along by the way. He loves me well and I have him given. He's saying कि मेरे साथ चलो, मैं उसको भी चेंज कर दूंगा। किसको? Cassius Ligarius को. So now they are planning to make Cassius Ligarius also a part of the conspiracy. And Brutus is saying, I can change him. Send him, but either I will fashion him and I will convince him. He's saying, उसको बुला के लाओ, मैं उसको उसके माइंड को ब्रेन वॉश कर दूंगा। The morning comes upon us and we will leave you, Brutus. Cassius is saying, the सुबह हो गया है and we will leave you. उन्हें अब 3-4 बज रहा है, so Cassius saying हम लोग जा रहे हैं Brutus, all disperse, मैंने सब separate हो जाओ, and beat all remember what we have said. मैं सुबह ऐसा ना हो कि सब कोई सुबह 10 बजे उठे तब जूलियस सीजर का मर्डर ही नहीं हो पाएगा। तो saying कि तुम लोग याद रखना क्या तुमने प्रॉमिस किया, so yourself as true Roman. Brutus is saying to everybody around, is saying to everybody, look fresh, मतलब एक्टिव रहो, एनर्जेटिक रहो, and put on the mask on your face, मतलब वो कपड़ा वाला मास्क नहीं, एक्टिंग वाला मास्क, and wear as Roman actors do. Romans actors बहुत famous थे, so saying Roman actors के तरह हम लोग अंदर से तो corrupted murderer रहेंगे, लेकिन ऊपर से हम लोग loving और polite रहेंगे। Being untired spirit, मतलब हम लोग एकदम बिना थके रहेंगे, बिना ऐसा दिखाएंगे we are very loving and kind. Formal constancy, मतलब एक जैसा चेहरा रहेगा। So good morrow to everyone. So it's in good morrow to everyone. Boy Lucius fast asleep. He's saying तुम सो गए? कौन सो गया? फिर ब्रूटस अपने सर्वेंट को बुला रहा है, oh Lucius, it is no matter, he enjoys the honeydew of sleep. Slumber means sleep. He's saying sleep is like a honey and he's enjoying his honey sleep. Though has no figure, no fantasy, no busy care that draws in the brains of man. He's saying कि कितना आराम से सोया है, ना इसको कोई टेंशन है, कोई फैंटेसी, ना कुछ, से इंसान का ब्रेन शांति जैसा सोया है। Therefore he sleeps so soundly, saying कि उसके माइंड में कुछ चल नहीं रहा है, कोई टेंशन नहीं, आराम से सो रहा है। इतने में पोर्सिया आई। ब्रूटस माय लॉर्ड, ब्रूटस इतना देर गार्डन में था, तो पोर्सिया उठ के आई, उसकी वाइफ पोर्सिया। So Brutus is saying, Portia, what mean you? Why did you rise from your bed? It is not for your health to commit yourself to the weak conditioning of the cold morning. Brutus is saying कि तुम्हारे सेहत के लिए तो अच्छा नहीं है कि तुम रात को 3 बजे यहाँ गार्डन में ऐसे घूमो। It is not good for your health to expose yourself to this cold morning. पोर्शिया बोल रही है मेरे लिए तो नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं है।
Brutus, you have stole from your bed yesterday at supper. So Portia अब ये बोल रही है कि कल रात को तुम बेड से उठ गए थे और तुम खाना खाते अचानक उठ गए थे. You were musing and sighing, you're expressing hands and gestures से, चेहरे से, हाथ के इशारे से कुछ आपस में बात कर रहे थे खुद से. When I asked you what the matter was, जब पोर्शिया से पूछी कि क्या बात है, you stared upon me with ungentle look. मतलब तब तुमने मेरे ऊपर गुस्सा से देखा था. When Portia urged further or request की, Brutus say, then you scratched your head and stamped your feet. तो ऐसे ऐसे किए अपने पैर को पट के. I insisted, but you did not answer. Portia बोले हम कितना रिक्वेस्ट किया लेकिन तुम बोले नहीं. But with an angry wafer of your hand, you gave me sign to leave. But Brutus said from his hand, so I did, fearing it will stand your impatience. So Portia बोली इसीलिए मैं तुम्हारे पास से चली गई. Which seems to be much enkindled and withal, hoping it was but an effect of humor. ये सोच रही है कि सबको कभी कभी मूड खराब होता है, तो हो सकता है तुम्हारा भी मूड खराब हो सकता है, इससे तुम्हारा और गुस्सा बढ़े. सो उस टाइम पोर्शिया ने ब्रूटस से और नहीं पूछा. Which sometime has his hour that every man, हर कोई कभी ना कभी उसका ह्यूमर मैंने मूड चेंज होता है. I will not let you, मैंने ह्यूमर मैंने ये टेंशन जो है ब्रूटस को, it will not let you eat, sleep and work. So पोर्शिया बोल रही है कि ये जो तुम्हारे मन में टेंशन है तुमको बात, सोने, खाने, सोने कुछ नहीं देगा. It will destroy your shape, मतलब तुम्हारा सेहत खराब हो जाएगा. It had much prevailed on your condition. I should know, Brutus. So he's saying कि ये important है कि तुम अपना दिल हल्का करो और मुझे बताओ. Brutus, dear my lord, make me acquainted with your grief or sorrow. So बोल रही है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मुझे अपना दुख और सुख बताओ. Brutus बोल रहा मेरा तबीयत खराब है. That's all. So पोर्शिया बोली अगर तबीयत खराब होगा तो कोई रात को 3 बजे गार्डन में, वो भी यूरोपियन कंट्री में घूमेगा. Brutus is wise, and if you were not in health, you should embrace the means to overcome it. पोर्शिया बोल रही है अगर तुम्हारा तबीयत खराब होता तो तुम उस तबीयत को ठीक करने के लिए कुछ कोशिश करते ना कि और तबीयत खराब करने रात को 3 बजे ठंडा में निकलते गार्डन में. ब्रूटस बोल रहा हाँ हम करेंगे करेंगे. पोर्शिया जाओ तुम सो जाओ. पोर्शिया बोल रही इज ब्रूटस सिक, इज इट फिजिकल टू वर्क अनब्रेस. पोर्शिया बोल रही है कि तुम बिना कोट के, बिना ओवरकोट के, यू आर सकिंग द ह्यूमर ऑफ द कोल्ड मॉर्निंग, मैंने तुम्हें ठंडा का हवा खा रहे हो. इज ब्रूटस सिक, will he steal out of his wholesome bed to dare the wild contagious of the night? Is saying कि तुम अच्छा खासा कंफर्टेबल बेड छोड़ के यहाँ सब contagious चीज हवा में घूम रहे हो उसको तुम आए हो दावत देने. To tend the rumian anchpajer, मतलब यहाँ जो हवा है उससे बीमारी होगा, वो अनक्लीन है, वो तो सिकनेस और बढ़ा देगा. No my Brutus, no, you have some sickness offense in your mind. पोर्शिया बोल रही है कि तुम बीमार बॉडी में नहीं माइंड में. And by the right and the virtue of my place, I ought to know it. ये बोल रही है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और as a wife ये मेरा राइट है कि हमको पता चले कि why Brutus is sad. So she kneels down and she says, on my knees I charm you by once commanded beauty. So he's saying मैं तुमको वास्ता देती हूँ, ओथ देती हूँ मेरे उस पहले वाले खूबसूरती का, शादी के टाइम का, and your oath of love that did incorporate as one. Is saying with the help of the marriage we have become one, husband and wife are better half. So she is saying कि उस ओथ का कसम, उस खूबसूरती का कसम, you did untold to me yourself that you are heavy. Is saying कि तुम अपने दिल को हल्का करो. Why are you heavy? किस बात का चिंता है? And why these men came here who have resorted to you, who came to take help from you? So she wants to know what is happening. She wants to know that because the marriage is incorporated and has made them one. So she is saying कि अब मेरा ये right है कि मैं जानूं कि तुम्हारे दिल में चल क्या रहा है. For here they have been some 6 or 7 men who did hide their faces even from darkness. This is एक ऐसे लोग थे जो अंधेरा से भी अपना चेहरा छिपा रहे थे. Brutus बोला उठ हो यहाँ से. Why are you kneeling down? Don't kneel down, Portia. Portia बोल रही है I should not kneel down if you were gentle, Brutus. Portia बोल रही है मैं kneel down नहीं होती अगर तुम अच्छे से बता देते तो. Within the bond of marriage, tell me Brutus. He's saying कि हम लोग का शादी हुआ है
मैरिज का बॉन्ड बना है, इज इट एक्सपेक्टेड दैट आई नो नो सीक्रेट? सो पोर्शिया बोल रही है कि वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, सो आई शुड नो सम सीक्रेट ऑफ यू appertaining money related to you. Am I yourself as it were in some kind of limitation? Saying कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या कोई लिमिटेशन के साथ कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊं, रात को बेड में फिजिकल कंफर्ट दूं और कभी कभी बात करूं बस? Am I not supposed to know your secret? Do I dwell in the suburb of your good pleasures? और suburb में normally prostitute रेड लाइट एरिया होते थे रोड में. So she is saying कि क्या मैं तुम्हारे दिल के suburbs में रहती हूँ? So she wants to say, if it were so, I am your harlot, not his wife. So she is saying कि अगर तुम मेरे सच्चे हस्बैंड हो तो हमको सीक्रेट बताओ, नहीं तो मैं ये समझूंगी कि I am your prostitute, I am your keep, I am a harlot, I'm a kind of sex slave for you. So here she is trying to emotionally blackmail Brutus by saying that if you don't tell me, then I will think that I'm just a slave who gives you pleasure at night and gives you food and helps you. And husband and wife are supposed to be emotionally connected according to her. So she says, I should know. I'm not living in suburb, I'm living in your palace, I'm your legal wife. So I should know the secret. If it be so, वो बोल रही है कि अगर तुम हमको सीक्रेट नहीं बताओगे तो हम सोचेंगे कि हम सबब में रहते, रेड लाइट एरिया में, महल में नहीं. नाम अब हम तुम्हारे प्रोस्टिट्यूट हो या वाइफ नहीं. लूटस बोल रहा, यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ. लूटस बोल रहा, नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. एंड यू आर डियर टू मी एज अ रूडी ड्रॉप्स दैट कम्स टू माय हार्ट. लूटस इज सेइंग कि जो खून मेरे दिल तक आ रहा है, I love you as much. If it be so, then should I know his secret? पोर्शिया बोल रही है अगर ऐसा है तो I should know your secret. I grant I am a woman, but withal a woman that Lord Brutus took to wife. इस कि हम मानते हैं कि तुमको सीक्रेट जानना चाहिए. So पोर्शिया is saying कि हम वुमेन है तो क्या हम सीक्रेट को रख सकते हैं छुपा के, because I'm married to Brutus and Cato's daughter. I'm very well reputed. So he's saying, don't you think I'm stronger than my sex? So she admits that women are of weaker gender and they can disclose secret. So she's saying, do you think I'm not stronger than my sex? Being so fathered and so husbanded. So she's saying कि मेरे पापा कैटो थे, मेरे हस्बैंड ब्रूटस है, मैं क्या सीक्रेट रिवील कर दूंगी? टेल मी योर काउंसिल. काउंसिल मैंने सीक्रेट, आई विल नॉट डिस्क्लोज देम. पोर्शिया बोल रही है कि हमको सीक्रेट बताओ, हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. I have strong proof of my constancy. She's saying कि हम बहुत सीक्रेट को होल्ड करते हैं. So she gives an example, giving myself a voluntary wound in my thigh. तो एक बार वो अपने थाई को काट के प्रूव दी थी कि वो कितनी स्ट्रांग है. Can I bear with patience not my husband's secret? So saying अगर हम थाई को काट के endure कर सकते हैं तो husband का secret को endure नहीं कर सकते हैं. Oh, you gods, render me worthy of the noble wife. Brutus is saying, oh God, she is such a good wife, make me good according to her. इतने में knock हुआ. Knock, knock. So Brutus is saying, Portia, go. In a while, I will come and tell you all the secrets. All my engagement, all my planning, all my characters, that why I'm so sad, all the reasons. So leave me with this. So Portia goes in the inner chamber, exit Portia, re-enter Lucius with Ligarius. Okay. Who is that knocks? Lucius' servant is saying, sir, he is a sick man who wants to speak with you. Lucius is saying, sir, एक बीमार आदमी है जो आपसे बात करना चाहता है. Cassius Ligarius, that Metellus Cimber spoke of. Oh boy, stand. Cassius Ligarius आया. Vouch good morning. मैंने accept good morning from a feeble tongue. Ligarius is saying कि मेरे कमजोर टंग से good morning accept कीजिए. What a time you have chosen, Cassius. Caius Ligarius, to wear handkerchief. Handkerchief is tied on the head of the person when they are sick. So Brutus is saying कि कैसा वक्त में तुमने handkerchief बांध लिया? अगर तुम बीमार नहीं होते तो अच्छा होता. Ligarius is saying, I am not sick. If Brutus have in mind some worthy thing of honor. Ligarius बोल रहा है कि अगर कोई अच्छा काम है तो मैं बीमार नहीं हूँ, कोई honorable काम है तो I am not ill, I am not sick. Brutus बोल रहा है such an exploit I have in hand. Brutus बोल रहा है ऐसा ही कोई काम है मेरे पास.
if you have a good healthy ear to hear. ब्रूटस बोल रहा है अगर तुम सच में सुनना चाहते हो तो मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट और रिसोर्सफुल काम है, ऑनरेबल काम है. तो लिगेरियस बोल रहा है तब गॉड को साक्षी रखते हुए अपना खोल दिया मतलब हैंकरचीफ, एंड ही सेज आई डिस्कार्ड, आई लीव माय सिकनेस, द सोल ऑफ रोम, आई एम अ ब्रेव सन. ही सेइंग कि मैं रोम का एक बहादुर बच्चा हूँ. आई एम ड्राइव फ्रॉम ऑनरेबल लायंस, मेरे माँ बाप बहुत ऑनरेबल थे. Though like an exorcist, you have conjured up my mortified spirit. So Cassius Licarius is saying to Brutus कि ब्रूटस जैसे एक जादूगर स्पिरिट में जान भर देता है, वैसे ही ब्रूटस के आने से बीमार लिगेरियस भी ठीक हो गए. Spirits are mortified, corrected. Now bid me run and I will strive with things impossible. He's saying कि हमको ऑर्डर दो, I will run with, as if it's impossible thing. ये get the better of them, what is to do. He's saying कि हमको बताओ करना क्या है. So Cassius Ligarius is very excited when Brutus is there. He says Brutus is like a magician who can provoke anybody, who can do magic on anybody to make them fight. A piece of work will make sick man whole. Brutus is saying कि मेरे पास ऐसा कोई काम है कि जो बीमार को भी ठीक कर देगा, जो ठीक है उसको बीमार कर देगा. That must be also. What is it, my Cassius? I shall unfold you as we are going. He's saying हाँ ऐसा ही कुछ बात है, लेकिन चलो 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 हम लोग जाएंगे. और Brutus is saying कि हम लोग का काम ऐसा है, a piece of work that will make sick man whole. Ligarius is saying अगर sick man whole होंगे तो हो सकता है कोई अच्छे लोग भी sick हो जाए. Brutus is saying हाँ वो तो होगा. So Brutus is not willing to disclose a secret in his house. So he's saying कि I will unfold him and I tell you as we are going. जब हम लोग जा रहे हैं तो तुमको बताएंगे कि किसके अगेंस्ट ये सब करना है. Ligarius is saying set on my foot, मतलब हम अपना पैर चला रहे हैं with a heart new fired, मतलब एक नई एनर्जी के साथ. To do I know not what. He's saying कि क्या करने जा रहे हैं मुझे खुद नहीं पता, but it is sufficient that Brutus leads me on. He's saying Brutus के साथ हम चल रहे हैं, यही मेरे लिए काफी है. Follow me then. So he's saying okay. Brutus is saying ठीक है तब मेरे साथ चलो. So the scene ends here, and the conspirators are ready to kill Julius Caesar. So here at the end of the scene, Ligarius and Marcus Brutus, they go to kill Julius Caesar. So thank you for watching the video, and if you have found this video of any help, please comment. Thank you for watching the video.